Assalamu alaikum, all of you. I hope you're all doing well. Welcome to our discussion on IBA's social science program. Before we start our panel discussion, let me tell you what you will hear about in this particular video. We'll talk about the history of social science programs, what they are, how they began, and what are the important components of this program. We'll also talk about how IBA's social science program is designed, what are the different curriculum aspects of this particular program, and what kinds of careers you can enjoy once you graduate. Lastly, we'll also talk about how this program is a good fit for you and what you can expect from it. I hope this will be of great benefit to you and you will be able to understand this program better. Thank you. Assalamu alaikum, all of you. I hope you're all doing well. My name is Mohammed Salman Ghaffar, and I'm the CEO and lead instructor at USUSAN. And today I have a very special guest with me, Amna Bhatti. Thank you, Salman, for having me. Hello, everyone. Thank you for joining us, Amna. So today's session is about the IBA Social Sciences and Liberal Arts program, what this program means for you, and we have the expert's opinion on why you should pursue this program. So let's begin. So let's talk about the IBA Social Sciences and Liberal Arts program. But before we do that, let me introduce our guest to you. We have to get with us together Ms. Amna Bhatti, who is a very special guest and who is an expert in social sciences and psychology. And I'm going to let her introduce herself to you. Please go ahead, Amna. Thank you, Salman. Salman and I go a very, very long way. We worked together for a number of years now. About myself, I started my educational career at Karachi University with a bachelor's in psychology and then pursued a continuous education master's in psychology as well. I also pursued, not too long ago, an MPhil in education from Aga Khan University. I worked as a human resource generalist for several years. I had a simultaneous teaching career for more than 15 years. And of course, with my specialty lying in psychology, मैंने काफ़ी अरसे तक जो है वो कराची के मुख्तलिफ स्कूल्स में ए लेवल साइकोलॉजी और ए लेवल इंग्लिश के सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अब IBA और मुख्तलिफ इदारों से गुजर के अब अपने करियर्स पे तवज्जो दे रहे हैं. करंटली मैं कनाडा में हूँ और मैं यहाँ पे कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट्स के साथ, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ. Thank you, Amna, and thank you for pointing out that हम और आप साथ काम कर चुके हैं पिछले तकरीबन कोई 16 साल से मैं आपको जानता हूँ and you have contributed a lot to Cordoba. तकरीबन कोर्डोबा की entire lifetime में आप हमारे साथ थी and you were an amazing influence there as a friend, as a colleague, as a teacher. माशाल्लाह आपकी contributions are amazing and अल्लाह ताला आपको उसका बहुत अजर दे. So आमना, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है IBA के social science program के बारे में. और who better to talk about this than you who has such a great experience in this program. So मैं आपसे शुरू करूंगा. पहले जो हम बात करेंगे वो ये है कि जी what exactly is social sciences and liberal arts. मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में हमें ज़रा एक्सप्लेन कीजिए. सो सोशल साइंस एंड लिबरल आर्ट्स एक बहुत ही वसी सब्जेक्ट है. इसके अंदर बहुत मुख्तलिफ चीज़ें, बहुत सारी डाइवर्सिटी इन्वॉल्व होती है. वो तमाम चीज़ें जिसमें जो इंसान के माशरे से जुड़ी हुई होती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक परसूट्स हों, हमारे मुआशी और माशरती इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशनशिप्स जितने होते हैं, जिसके अंदर फ्रॉम एनीथिंग दैट एंगेजेस ह्यूमन एंगेजमेंट, ह्यूमन कैपेसिटी, टू इकोनॉमिक्स, टू सोशल रिलेशंस, वो सब कुछ लिबरल आर्ट्स का हिस्सा होते हैं. लॉ इज पार्ट ऑफ लिबरल आर्ट्स, फिलोसफी इज पार्ट ऑफ लिबरल आर्ट्स, पॉलिसी इज पार्ट ऑफ लिबरल आर्ट्स, एजुकेशन इज पार्ट ऑफ लिबरल आर्ट्स. सो इसमें बहुत डाइवर्सिटी है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं. लेकिन to summarize, anything that involves the relationship of man with society is part of social sciences and liberal arts. Okay, so उसका मतलब तो ये हुआ कि even something like marketing could be a part of social science because जो marketing individual है वो भी इंसान की psychology को समझ के उसके हिसाब से products को marketing करता है, उसको design करता है. So one might even include marketing as a part of social sciences. Absolutely. The fundamentals of marketing is psychology. If you don't understand the audience that you're talking to, what are you going to sell to them? Absolutely. मुझे याद है जब हम IBA में थे तो हमने कंज्यूमर बिहेवियर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा था और हमने ह्यूमन बिहेवियर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा था. तो आई गेस दैट वाज अ पार्ट ऑफ लिबरल आर्ट्स एज वेल. वेरी गुड. अच्छा जी, एंड व्हाट एल्स कैन यू टेल अस अबाउट सोशल साइंसेस?
Well, very interestingly, historical background of social sciences and liberal arts is something that very few people actually learn about or they know about. But the beginning of higher education was rooted in liberal arts. बुनियादी तौर पे दो तरह की ही तालीम होती थी. जब हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दुनिया में आना शुरू हुआ है, उसमें दो तरह की तालीम होती थी. एक उन लोगों के लिए जो स्किल्ड ट्रेड्स में जाते थे, फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मेसन्स हैं, सो ऑन. सो देयर वाज स्किल्ड ट्रेड एंड देयर वाज लिबरल आर्ट्स. सो वो लोग जो फ्री पीपल थे, लिबरेटेड पीपल थे, आजाद थे, और वो अपनी मर्जी से जो चाहें वो परसू कर सकते थे अपनी मर्जी का काम, वो लिबरल आर्ट्स को स्टडी करते थे. और उसमें बुनियादी तौर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था वो लॉजिक था. बिकॉज बेसिक एजुकेशनिस्ट और फिलोसफर्स का मानना ये था कि इंसान की इंसानियत के लिए, टू बी अ सोशल पर्सन, टू बी अ पर्सन हु कैन कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू सोसाइटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट यू शुड हैव इज टू be able to do logical thinking. So that was the foundation of liberal arts and social sciences. And those curriculum that were designed for the liberal arts were offered to those people who were able to pursue those in liberation of their mind. So the diversification was between skilled trade and liberal arts, basically. And all other curriculum have emerged out of liberal arts. All other specializations have emerged out of liberal arts. But that is the foundation of higher education in terms of history of education and history of humanity to begin with. Okay, so now I see the connection between logical thinking and liberal arts. So essentially, that's the reason why something like economics or psychology or even marketing or law, for example, as you mentioned, is a part of liberal arts, because essentially you're teaching people how to think logically, right? Absolutely. So even though I might not know exactly how to do accounting, for example, because that's something like a specialized skill, but if I'm able to think logically, then there should be plenty of things that I should be able to pursue. That's basically the idea, that from what I understand from your discussion, right? Absolutely. And not just that, you should be able to pursue other things. Even if you employ an accountant in your service, you Right. should be able to understand logically what the accountant is doing, because you have a fundamental understanding of the logic of how systems work. Correct. So it basically means that an understanding of liberal arts would probably be very useful in trying to develop new fields of thought as well. Absolutely. Okay, great, great. So now, what about why is liberal arts a part of universities, and how do they incorporate this in their curriculum as well? Well, it's a very popular subject across North America. In fact, I would say that almost all of North American education for after high school starts with the liberal arts curriculum. Almost every single student goes to a liberal arts program, and they complete their first 4 years in some way related to social sciences and liberal arts. They may have a diversification focused on other subjects. For example, they also allow students of liberal arts to pursue chemistry or physics or mathematics if they wish to. But their fundamental programs are focused on liberal arts and social sciences. So sociology, psychology, in fact, has the number one, it's the number one category of admissions in North America. So highest number of student applicants in North America is for the subject of psychology in undergraduate education. Okay. It's very popular. Not business like Pakistan, not BB. Business, not business. Business is a very, one of the students that I'm working with over here right now actually selected international business and dropped it because he felt like it's not really engaging enough. So funnily, people here are more interested in learning about ethics, history, law, society, psychology, sociology. They are more interesting subjects. And they are, I mean, a lot of students in all of North America, and even Australia, by the way, they go through the social science curriculum for the first 4 years of the university education, and then they specialize into whatever they want to pursue further, which could be management, which could be other programs, because the social science curriculum is built into most of the programs anyway. Right, right. So even if they choose to study, for example, accounting and finance, half of their undergraduate studies is
parallel to the social science curriculum. Correct. Correct. The social science curriculum is built into a vast number of programs across all of North America and even Australia. I'm talking about North America and Australia in particular because these are the two very popular destinations for South Asian students these days. But otherwise, of course, there are programs all over the world, but these two in particular focus on social sciences a lot. Great. So I think I actually see what you're trying to say, because even when my son is doing his university right now, every semester he has one or two courses that have to do somehow with liberal arts, be it writing or be it the history of thought or even subjects like astronomy, etc. And I see why they sort of do this into the system, because मेरा एक्चुअली आई अंडरस्टैंड कि हम पाकिस्तान में मेजॉरिटी केस में जब हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमारा मकसद होता है कि बस वो चीज़ सीख जाए, कुछ और ना सीखे। अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो आपको बस वही डॉक्टरी आनी चाहिए, कुछ और आपको आए ना आए। और सिमिलरली इंजीनियरिंग में भी यही है और आईटी में भी यही है। मगर यहाँ पे आई थिंक जो एक फ़र्क है वो ये है कि वो अपनी सोसाइटी में इंसान की क्या कंट्रीब्यूशन होगी उसको बिल्ड करते हैं थ्रू द लिबरल आर्ट्स करिकुलम। एब्सोल्युटली, ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता था जब मैं पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के साथ काम कर रही होती थी, खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो अपने ए लेवल प्रोग्राम्स के बाद या अपने इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स के बाद यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेते थे। उनसे अक्सर मैं ये सुनती थी कि हमारा वक्त क्यों जाया किया जाता है इन टू टीचिंग अस यूजलेस सब्जेक्ट्स दैट हैव नथिंग टू डू विद व्हाट वी एक्चुअली आर हियर टू स्टडी। एंड मैं हमेशा उनको यही बात समझाती थी कि आपकी जो आप कोर सब्जेक्ट अपना पढ़ने आए हैं उसकी एप्लीकेशन किस चीज पे करेंगे। आप किसी वॉइड में नहीं रहते, आप एक सोसाइटी में रहते हैं, और जब तक आप सोसाइटी को नहीं समझेंगे या उसके प्रिंसिपल्स को नहीं समझेंगे तो आपकी स्किल उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकेगी। सो इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, why should we study social sciences? Because you are a social person. So Challenge. Absolutely, because we are, social animals. if you remember Dead Poet Society, and you remember that little passage where Robin Williams goes about talking about why we study poetry, because we are members of the human race, gives you goosebumps. Absolutely. Absolutely. Okay, great. So now let's move on and talk about the IBA's social science program, because that eventually is something that I want to explore. So हमने अभी मैंने और आपने कुछ देर पहले जब उसको डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि IBA के जो मेजर्स हैं वो 4 हैं। I would like you to introduce those 4 majors to the students here, please. Okay, so the social science program is again IBA ने भी बड़ा अच्छा सोच समझ के इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस देते हैं: हिस्ट्री, मीडिया एंड कल्चर, पॉलिटिकल साइंसेज एंड साइकोलॉजी। तो स्टूडेंट्स अपने सीनियर ईयर में आके चूज कर सकते हैं इनमें, इन चारों में से कोई एक कोर को अपना वो मेजर चूज कर सकते हैं और उसी में अपनी स्पेशलाइजेशन बना सकते हैं। सो हिस्ट्री, of course, the history of ideas to begin with, and then general history, media and culture, everything from the ethics of media, all the way down to the practices of media, political science, the political philosophy that has informed all our societies. पाकिस्तान में तो political discussion के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि कोई खाना complete हो सकता है। तो political science एक बहुत ही important subject है, और psychology, of course, the understanding of the human mind and human behaviors. जो आपकी field है, by the way. जो मेरी field है। जी, that's why I'm very careful about what I say in front of you, because आप हमेशा psycho analysis करना शुरू हो जाती हैं। नहीं करती। See, those who study psychology understand that every individual is different and there can be no judgment. So everybody should feel safe in the presence of a psychologist. I wish all people who study psychology felt the same way as you do, but I will reserve my judgment on that. Okay, so मुझे ये बताइए कि अगर कोई शख्स IBA में दाखला लेता है तो आपके ख्याल से उसको कौन सी ये फील्ड चूज करनी चाहिए, या वो वेट कर सकता है इसको चूज करने के लिए? वेट तो आपको करना ही है, थोड़ा सा इंतजार तो आपको करना ही है, और ये अच्छी चीज है कि आपको पहले 2 साल मौका मिलता है कि आप चारों प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ी थोड़ी आपको जो है वो मालूमात देते रहते हैं। आपको सेमेस्टर 1 से लेकर 4 तक, या 1 से लेकर 4 तक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इन चारों जो मेजर्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते रहें।
सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेमेस्टर स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखेंगे, तो आपको हर सेमेस्टर में एक दो ऐसे प्रोग्राम्स मिलेंगे जैसे कि हिस्ट्री ऑफ आइडियाज है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है, इंट्रोडक्शन टू कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, कल्चर मीडिया एंड सोसाइटी है। ये प्रोग्राम्स आपको थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे आपके शुरुआत में कि आप ये प्रोग्राम्स आगे चल के किस तरह की शक्ल इख्तियार करेंगे। तो फिर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ योर फर्स्ट 2 years, you have the chance to study these and decide on your own, do your own research, which of these seem the most attractive to you and they align the best with your personal ambition and what you want to do with your life. So you don't have to choose right at the beginning. Nothing is thrust upon you कि आपको यही करना है और आप now you're stuck with that choice. You have the first 2 years to go through a broad spectrum of curriculum and then decide for yourself in your third year where you want to major. Right, and we were also discussing this idea that a lot of these courses are also similar to what people studying business or accounting and finance or even economics might be studying. So there is some obviously, Absolutely. things like English grammar or statistics. Absolutely. Yeah, those are things that people. So you might even have the possibility of credits transfer later on if you want to switch. Absolutely. These programs are a requirement for any undergraduate program across Pakistan. पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, किसी भी प्रोग्राम से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने पहले 2 साल में ये कोर्सेज करेंगे। Okay, तो आप ना सिर्फ आईबीए में बल्कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोग्राम में होते, आपको ये कोर्सेज तो करने ही थे। correct. इंग्लिश तो आपको करना ही था, पाकिस्तान हिस्ट्री तो आपको करनी ही थी, कैलकुलस मैथमेटिक्स आपको करना ही था, रिलीजियस स्टडीज लॉजिक एंड एथिक्स भी आपको करना ही था। Right, ये फर्क हो सकता है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इन प्रोग्राम्स को मुख्तलिफ नामों से लेबल करती हों। सो फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन की जगह कम्युनिकेशन डिजाइन का नाम होता, फॉर right, एग्जाम्पल। right, सो ये मुमकिन था लॉजिक एंड एथिक्स की जगह फॉर एग्जांपल सोशियो आई सी द सेमेस्टर 4 would have socio-economic philosophy of Islam or philosophy, logic and ethics, right? right. This could be retitled religious studies, but it would make no difference because this curriculum is actually HEC required curriculum और वो हर यूनिवर्सिटी में हर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का हिस्सा होता है। तो आप आईबीए के ही किसी दूसरे प्रोग्राम में होते, बीबीए कर रहे होते, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहे होते, तो भी आप ये कोर्सेज करते। तो बाद में अगर आप कभी आगे जाके आप कोर्स क्रेडिट का सोचें भी, इसके बारे में भी एक राय है, लेकिन अगर आप कोर्स क्रेडिट का सोचें, ट्रांसफर का भी सोचें, तो आपको आधे से ज्यादा कोर्सेज का तो ट्रांसफर वैसे ही मिल जाता है। Hmm. आपके बहुत सारे जेनेरिक कोर्सेज होते हैं जो हर एक के लिए अवेलेबल होते हैं यूनिवर्सिटी में, जिनको जनरल इलेक्टिव्स कहते हैं। Right. तो वो So जनरल इलेक्टिव, let's talk about the electives जो आपने जिक्र किया। So अगले जो 4 सेमेस्टर हैं उनमें electives आ रहे हैं हमारे पास, right? बिल्कुल अब कैन यू एक्सप्लेन कि ये मेजर कोर में और ये जो फिर बाकी electives हैं इनमें क्या फर्क है? बिल्कुल। मेजर कोर तो देखें जो होता है वो, अब आपने सेमेस्टर 5 में आप आ गए हैं तो इसका मतलब है आप थर्ड ईयर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेमेस्टर 5 एट द स्टार्ट ऑफ योर थर्ड ईयर यू हैव टू डिसाइड बिटवीन द 4 ऑप्शंस दैट यू हैड। आपके पास पहले जो हमने पेश किए थे कि हिस्ट्री, मीडिया एंड कल्चर, पॉलिटिकल साइंसेस एंड साइकोलॉजी। अब वो वक्त आ गया है कि आप इन चारों में से किसी एक को चुन लें और उसमें स्पेशलाइज करें। तो जो आपके मेजर कोर्सेज हैं, मेजर कोर 1 2 3 4 5 6, ये आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल समबडी हैज चोजन पॉलिटिकल साइंसेस, तो उनके जो मेजर कोर्सेज होंगे वो सारे पॉलिटिकल साइंसेस में से होंगे, सही। जिनमें से चंद कोर्स वो अपने थर्ड ईयर में करेंगे और चंद कोर्स फोर्थ ईयर में करेंगे। बाकी जो इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं वो इलेक्टिव कोर्सेज throughout the program, even if let's suppose you have chosen political science as your major, but you want to study something from history, Right, or you find that something in economics is interesting or something in psychology makes sense to you, तो right, आप वो अपने electives के तौर पे ले सकते हैं। तो right. वहाँ electives में भी आपके पास जनरल ह्यूमैनिटीज electives होते हैं। सो Right. फॉर एग्जाम्पल आप तो ये आपने बताया कि ये ह्यूमैनिटीज इलेक्टिव यहाँ पे आ गया, सो ये एब्सोल्युटली ह्यूमैनिटीज इलेक्टिव होता है। इसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिटीज के किसी भी सब्जेक्ट में से, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट में से आपने ले लिया, तो आपने कोई मैनेजमेंट कोर्स ले लिया which is perfectly credible, right? And if you are doing political sciences and you are
clubbing it with a management course, it makes absolute sense because political science means applying political science to management of society, Right. right? So studying management is a great idea along with political sciences. इसी तरीके से आपके पास नॉन स्पेशलाइजेशन इलेक्टिव्स होते हैं. आप उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज कर ही नहीं रहे, आपका उससे कोई लिंक नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी just on the basis of your interest in the subject, you want to study it. So go ahead and do that. So there is a whole list of courses that's available on the IBA website, and you can choose those courses. And this is something that you don't have to do right now. If you are a beginner student, if you are a freshman, you don't have to do this right now. This list of courses will be available to you on the website when the time comes. So जब आप अपने सेकेंड ईयर कंप्लीट कर रहे हो, आपका फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट कर रहा हो, उस वक्त आप देखिए कि अब मूविंग फॉरवर्ड व्हाट ऑप्शंस डू आई हैव. वहां पे आईबीए की वेबसाइट पे वो लिस्ट मौजूद है, आप उसको खोलिए, देखिए, और उस वक्त तक आपकी तवज्जो उन तमाम चीजों की तरफ जा चुकी होगी, आपका इंटरेस्ट बन चुका होगा कि आप देख सकें कि ये कोर्स मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये डिजिटल इकोनॉमी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है फॉर एग्जांपल, या मुझे एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म इंटरेस्टिंग लग रहे हैं. Right. So now look at those things which are making sense to you in terms of आप अपने साथ क्या करना चाहते हैं, आपने अब तक क्या किया है, और आपके इर्द गिर्द माहौल में हो क्या रहा है. फ्यूचर ट्रेंड्स को भी तो देखिए ना, आपके इर्द गिर्द दुनिया कैसे मूव कर रही है. उन चीजों को देख के आपको जो कोर्सेज उस वक्त अपने लिए मोस्ट सूटेबल लगे आप पिक कर लें. बट यू स्टिल हैव 2 years to go for that. You don't have to do it right now. Great. So thank you for now breaking down and understanding, because now students will understand कि जो हमारे ये 8 सेमेस्टर्स हैं उसमें पहले 4 सेमेस्टर में पहले 2 साल जो है वो फिक्स्ड कोर्सेज हैं, और अगले 2 साल जो है वो आपके मेजर Course. कोर कोर्सेज हैं और आपके इलेक्टिव्स हैं जो मेजर्स के भी हैं और माइनर्स के भी हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द पॉसिबल करियर्स इन सोशल साइंसेज, बिकॉज सबसे जो बड़ा सवाल लोगों के जहन में आता है वो ये आता है कि अच्छा जी हम डिग्री तो कर लेंगे, बट हाउ विल आई कन्वर्ट दैट इनटू अ वायबल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी फॉर माई सेल्फ. सो मेरे जो जहन में सवाल था वो ये था कि अच्छा जी क्या मैं अगर डिग्री कर लेता हूँ सोशल साइंस की तो क्या मैं टीचर बन जाऊँगा, या क्या मैं रिसर्च एनालिस्ट बन जाऊँगा, या मैं क्या करूँ, या मैं सिविल सर्विस की तरफ जाऊँगा, बिकॉज आई सी दैट अ लॉट ऑफ द पीपल हु कम इनटू सिविल सर्विसेज हैव अ सोशल साइंस बैकग्राउंड. So I'd like to hear your opinion on this particular issue. Okay, so first of all, हर करियर मोनेटाइज्ड होता है. ठीक है, आप जो भी करेंगे अपनी जिंदगी के साथ, आप पैसे तो कमा ही लेंगे. ठीक है, Inshallah. इंशाल्लाह इंशाल्लाह एवरीबडी मेक सफिशिएंट इनकम. अल्लाह ताला ने सबके लिए रिस्क का इंतजाम किया है. तो आप अपनी my personal experience has been that does not matter आपने क्या पढ़ा है. What matters is how well you can apply what you have learned. So बिल्कुल. your application of your knowledge will make your career, right? So ठीक. how you choose to apply yourself, that is what is going to make will incentivize your career for you. There are a few ways of looking at how you can build a career after your social sciences program, right? एक विजन होता है प्रैक्टिस का, कि आप प्रैक्टिस में चले जाएं, आपने जो चीज सीखी आप उसको अमल में ले आए. सो फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो मीडिया एंड कल्चर पढ़ा है, आप जर्नलिस्ट बन जाइए. ठीक है. आपने मीडिया एंड कल्चर में ग्रेजुएट किया, so that has given you an edge, an advantage in understanding how media systems work. You have learned how to create digital content, or you have learned how to create journalistic content. आप investigative journalist बनना चाहते हैं, आप जो है वो आर्टिकल राइटिंग करना चाहते हैं, आप साइऑप्स करना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, तो आप प्रैक्टिस में आ जाइए. आप अपनी डिग्री को कन्वर्ट कर लीजिए और प्रैक्टिकली स्टार्ट कर लीजिए. अगर आपने साइकोलॉजी में किया है फॉर एग्जांपल, और आपको लगता है कि परसुइंग अ डिग्री इन साइकोलॉजी मींस मूविंग फॉरवर्ड एज ए फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, Okay. specialize in that and become a practice as a forensic psychologist. What's a forensic Practice. psychologist, by the way? That's an interesting thing. I've never heard of it. A forensic psychologist is somebody who works with law enforcement agencies to understand the motivations of crime. Very nice.
Okay. So they work with law enforcement agencies to solve crime, by the way. So a forensic psychologist would help the police make investigations, will help make analysis of what could have motivated a crime, whether a person, um, how a person would think in a critical situation, in a conflict situation, and how to mitigate those situations. Those are what forensic psychologists do. They're investigative So I'm psychologists. I'm thinking because I was always a murder mystery buff, so I'm thinking if I Agatha Christie yeah, fan. maybe Agatha Christie was a forensic psychologist. Who knows? Okay. Knows. So Right. that So, it's just basically, one of the fields. Mm. what you're saying is कि one way of looking at it is to say कि अच्छा जी जो मैंने फील्ड जिस पे पढ़ा है उसमें मैं एक्चुअल उसकी प्रैक्टिस में आ जाऊं तो मैं क्या कर सकता हूँ, दैट्स वन वे। बिल्कुल। यानी कि That's आप कामरान खान टाइप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं या आप मर्डर मिस्ट्री लिखना चाहते हैं या आप वो absolutely. साइकोलॉजिस्ट चाहते हैं, एक्चुअल आप हाँ, साइकोलॉजी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा। ओके नेक्स्ट। और एक और तरीका ये है कि आप अपना करियर एकेडमिक्स और रिसर्च में बनाएं। ओके कि आपने जो जिस फील्ड में भी स्पेशलाइज किया है आप उसकी एकेडमिक परसूट करें। सो फॉर एग्जांपल यू टेक द लॉन्ग रूट ऑफ गोइंग इफ यू आर मोटिवेटेड दैट वे। अगर आपके अंदर कमिटमेंट है, आप एकेडमिकली मोटिवेटेड हैं, आप यू वांट टू गो द डिस्टेंस, go for further education, go for your master's, go for your PhD, become a researcher of the subject, contribute to the growth of the subject। आप उसके ऊपर रिसर्च राइटिंग करें, आप उस फील्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, आप उस फील्ड के ऊपर मजीद लिखें, आप लोगों को मजीद तालीम दें उसके बारे में। आप एकेडमिक सर्कल्स के अंदर एंगेज करें, आप किताबें लिखें। आप बहुत सारे इस तरह का काम है जो एकेडमिक और रिसर्च डेवलपमेंट के साथ हो सकता है। Can you, sorry for stopping you here. Can you name a few people that come to your mind in Pakistan or internationally who you believe could be the kinds of people? So, for example, I'm thinking of Dr. Aisha Siddiqa, who wrote the famous book Military Incorporated. Yeah. Yeah. And her book is the book of Pakistan studies in all universities, by the way, right? Acha, acha. Yeah, it is absolutely. And there are so many other people. One of our students, Salman, Mohsin Yusufi, agar aapko yaad ho, Right, right. he was one of my social science students. He decided to pursue architecture. And these days he's doing his PhD at Georgia Tech. Okay, And his focus is on architecture as a contributor to social mapping. okay. Social mapping. Social, yeah. So how do we build social maps, Mm-hmm. and how architecture can contribute in building societies? Okay, Not that societies are building architecture, but how architecture is driving society, right? So he's doing amazing work. He has just written some papers with researchers from Harvard, and he's doing excellent work in US these days. He was working with I'm sorry, the name escaped me, but he was working with a big auto manufacturing company okay. recently to understand how architecture and design Mm-hmm. would complement human psychology, Okay. right? So Interesting. he's an example of what you can do as an academic and as a researcher. Everything you do, every design that is around you, is based on some research done by these people. So आपकी गाड़ी में, for example, मैं आपको बहुत छोटी मिसाल दे रही हूँ, लेकिन अगर आपकी गाड़ी में आपने नोटिस किया हो कि पुरानी जो गाड़ियां होती थी, अगर किसी बच्चे को कहीं कोई विंटेज कार मिल जाए तो मैं एडवाइस करूंगी जरूर जाके देखें। उसमें हैजर्ड का जो बटन होता था वो क्लिकर होता था, आप उसको क्लिक करते थे, उठाते थे, या वो आप स्विच करते थे तो वो हैजर्ड लाइट जलती थी। Right, Research into human psychology showed that in moments of crisis, you brace for impact. right. You brace for impact. So now you would notice that in newer design, the button for hazard is placed right at the center, and it's a pressing button. So as soon as you feel like there's a crisis coming, you brace and you hit the button. ये आइडिया कि वो क्लिक नहीं करना है बल्कि प्रेस करना है, ये शिफ्ट कैसे हुआ? This is psychological research, Right, right. right? So
anything that you can go into so much of research and development, regardless of which area you're coming from, and so much of academic research, that everything around you, all the design that is being used around you will be influenced by it. So Right. that's So brilliant. basically we can tie this into how companies are selling us social media products, and they design the entire experience in such a way as to keep you engaged as much as possible. And then also show you the relevant advertisement so that they can encourage you to buy the right product so that they can drive revenue. So basically what you're saying is that it is a complete misunderstanding when people have that they feel that if they do a social science and liberal arts program, they will not have good career opportunities. From what I can see, social science is driving a lot of research into developing products that people find Products for engaging. society. Exact. Okay, great, excellent. And any other things that you want to add over here about careers? So if I mean these are preferred dimensions, but if there's a student who ideally has a career pathway in their minds, and they say that मुझे तो management consultant ही बनना था, या मुझे एक business specialist ही बनना था, so following your undergraduate in social sciences, you still absolutely have the opportunity for going for an MBA, going for a CSS exam, law, management sciences, masters, whatever you want to do. So all of these programs all over the world accept social sciences students. So अगर आपने social science में undergraduate किया है, regardless of your field of specialization, history, media and culture, doesn't matter, you are eligible for admission into an MBA program absolutely anywhere. So if you have a vision that you want to convert your degree into a career pathway that leads to management sciences, or it leads to a professional degree that allows you to work in a corporate service, then you can always go for your MBA in your field of specialization, where whatever you choose it to be. आप उसको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में भी कर सकते हैं, आप उसको बिजनेस मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं, आप उसको ह्यूमन रिसोर्सेज में भी कर सकते हैं, और मास्टर्स की इतनी फील्ड्स हैं कि उनको यहाँ पे कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है. अगर आप यूनिवर्सिटीज के 2-4 यूनिवर्सिटीज ही आप देख लें, आई एम नॉट सेइंग आप हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज देखें, आप 2-4 यूनिवर्सिटीज उठा के देख लें, आपको उनके जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं या ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, उनकी इतनी तवील लिस्ट मिलेगी कि आप हैरान रह जाएंगे. There are hundreds of programs to choose from, and you as a social science graduate, you are eligible for entry into absolutely any of those programs. So whatever your future, you can always go there following your graduate. Interesting. So I know of this student who did her bachelor's in criminal psychology. Uh, Interesting choice थी उसकी. She went to the States and she did this program. Uh, and she found it interesting. मैंने कहा तुम ये क्या? But she was like, नहीं sir, I like this program. I'm going to do this. Eventually, she came back to Pakistan, and instead of pursuing a career in criminal psychology, she actually ended up working for a marketing company because she had great understanding of psychology. So, Psychology. so she built a very successful career in marketing eventually. So excellent. So this basically is it. And now the last thing, I know we are well beyond time. हमारा इरादा था कि हम 15 से 20 मिनट में इसको wrap up कर लेंगे. So one last question that I want to ask you before we wind up for today is, what, in your opinion, is why should someone choose social sciences and liberal arts as a first choice? That is one thing that I want to hear from you about. Believe it or not, it is actually a first choice for a lot of people. They choose to study liberal arts because they choose to study something that allows them to liberate their minds. Simply speaking, मतलब इससे ज़्यादा close definition इसकी नहीं हो सकती. आप अपना जहन खोलने के लिए, उस अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुताबिकत रखने के लिए, उससे जुड़ने के लिए, जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, जो लोग इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं कि वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगियां भी इंप्रूव करें, वो एक्चुअली चूज करते हैं कि वो सोशल साइंसेस पढ़ें. एंड आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एज अ क्लोजिंग रिमार्क हियर. Like growing up as a normal Pakistani teenager, of course, I also wanted to be a doctor. And of course, my family also thought that I should be a doctor because, smart hai, ye hai, wo hai, so sab grades aa rahe hain, aap doctor ban jaye.
And I went through the mill. I took pre-medical in my intermediate, and I actually attempted all entrance exams for medical colleges, and I got in Okay. medical colleges. Okay. And I chose to forego those admissions. And I Dr. Amna. chose, yeah, I could still be Dr. Amna of something else, but I chose to study psychology. This was a choice. Okay. It's not like मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मैंने चूज किया कि अच्छा मुझे बीबीए नहीं मिला तो चलो मैं साइकोलॉजी पढ़ लूं. मेरे पास मेडिकल कॉलेज का एडमिशन था और मैंने चूज किया कि मैं साइकोलॉजी पढ़ूं. So people decide to do this because they feel like this is going to enable them to broaden their horizons so much more than being in a predefined skill trade. Okay. Okay, and one last question that has just come to my mind, because I mean Yeah. you spoke about this, so I'm going to add this on right now. As a student, see, normally if you talk about business, you say, okay, why would I want to pursue business? Well, I want to pursue business because I'm good at accounting, I'm good at economics, I understand marketing, I want to be a businessman. Mm. Uh, what are the things that one should be good at in order to do well at social sciences? Being open-minded, Mm-hmm. and that's the only thing you need. You don't need everything you need to excel in social sciences will be taught to you. You will be taught statistics, which is very important for research methodology. You will be taught writing and communication, which is very important for social sciences. Everything will be taught to you. You just need to be open-minded and willing to learn. That's all you need. You will excel. And is social sciences very dry, very Oh boring? no, opposite of dry, if anything. There's so much to study there. There's so much debate to be had in class. पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा? एक कॉलेज की क्लास में सवाल पूछा गया, सोशल Right, साइंस की क्लास में. एक बच्ची ने जवाब दिया, जब तक हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सड़कें तक नहीं है, तो एक बच्चे ने जवाब दिया तो क्या सड़कें बना के पाकिस्तान बनाएंगे? right, right. राइट. तालीम से बनेगा पाकिस्तान, सेहत से बनेगा पाकिस्तान, या सड़कों से बनेगा पाकिस्तान? इंटरेस्टिंग डिबेट एंड एवरी पॉइंट हैज मेरिट. Well, शबाश शरीफ से पूछा जाए तो सड़कों से बनेगा. सड़कों से बनेगा. अच्छा Interestingly जी, enough, this came from a university, a very famous university in Punjab. very So interesting. वहां तो सड़कों से ही बनेगा. Absolutely, वहाँ तो सड़कों से ही बनेगा. सिंध में सड़कें पता नहीं कब बनेंगी. In any case, Amna, thank you. This was a very engaging discussion, and I loved having you here. And I hope that we will do more sessions like these, inshallah, and have more engaging discussions like these. And what we'll do is we'll post this to our social media and let students watch this. And if they have any questions, I'll tag you there. And if you feel that you Absolutely. have the time to answer a few of them, it would be lovely. Would But be thank you happy. so much for being here, and all the best to you and your family. And let's meet soon, inshallah. Thank you so much, Salman. It was lovely meeting you after a long time. Good old vibes of the great time that we had at Cordoba. Well, Uh, that's a good thing about being good friends. Now, it doesn't matter how long you don't meet. As yeah, soon as you you can meet catch them, up it's like, anytime. exactly. Thank you so Yeah, much. all the best to the students who are We've planning got to to. do we've got to do a couple of sessions where we can pull in Natasha and Ahmed as well. Absolutely. Thank you so much. All Take right. care. Take care. Bye bye. Hafiz. Allah Hafiz.